In front of you, you can see there is a cup, and this is a cup of water, not tea. So what is there inside this cup? As I have said, there is a water inside it, and what we need to find? We need to find the number of positive and negative charges. Okay, so this is the example 1.3 of your electric charges and field. How much positive and negative charges is there in a cup of water? So there is a very simple daily life situation where you can relate this, that how can we find, if suppose we try to find the number of electrons, or not electrons actually, the number of positive or negative charge. So there is a, suppose this is a, there is a water up to this level, and this is not mentioned how much amount of water is there, so we can guess and we can consider any amount of water. So we, first of all, we consider that. So there are, basically we need to find what is the, how much molecules of water are there. So this is the molecule of water. Okay, so this is red color is oxygen, and this one red white one shows the hydrogen part. So there are two hydrogen part, and there is a one oxygen part. So the formula is H2O. This is the water formula of water. So first of all, we consider that, let the mass of water inside this, the mass of water, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कुछ भी, ठीक है ना, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे, लेकिन सपोज वी रिप्रेजेंट इट बाय स्मॉल m, एंड दैट इज वी कंसिडर एट 200. आप इसको 200 भी ले सकते हैं, 300 भी ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, अकॉर्डिंगली आपका आंसर भी आएगा. अब हमें अगर इसका फॉर्मूला पता है, केमिकल फॉर्मूला, देन वी कैन ऑल्सो राइट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, दैट इज H2O. तो मॉलिक्यूलर मास हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दैट इज 2 एंड 16. ओके, ऑक्सीजन का तो 16 एंड दिस बिकम 18 ग्राम. इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट द मॉलिक्यूल, यानी H2O का अगर हम ग्राम में करें, इसका मास निकालें, दैट वुड बी 18 ग्राम. so that is the molecular mass. Okay, so now we have the mass of the substance, we have the molecular mass of that substance, so we can calculate here a number of moles. The number of moles we can now calculate. The number of moles represent it as small m, and that can be calculated as small m divided by capital M. Okay, here there is a relation that n is equal to m upon capital M, and this is also the number of particles divided by the Avogadro number. So this is a relation we use in this question. यहाँ पर इसको यूज करेंगे, ठीक है, and then we will calculate the total charge, positive as well as negative. Okay, so here what are the terms used? So n is the number of moles, number of moles, ठीक है, और m हमने अभी बताया, इट्स अ मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस जो भी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे वाटर है, दैट इज आवर सब्सटेंस हियर. कैपिटल M is molecular mass, this is the molecular mass. Okay, and here n is the number of particles, number of particles. That particles means it can be atoms, it can be molecules, and n naught is the Avogadro number, which is equal to 6.02 into 10 raised to the power 23. This is the Avogadro number. Okay, so now if we have the number of moles of H2O, then we can calculate the number of molecules. Okay, so number of molecules can be calculated here as the number of molecules, and the number of molecules, because that is n. Okay, from the formula also you can see that this is n into n naught, n into n naught, that is m upon capital M into n naught. Okay, this is your n naught, n naught. Okay, so that is 250 divided by 18 into 6.02 into 10 raised to the power 23. हमारे पास कितने आ गए? इतने हमारे पास. देयर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, H2O जो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर,
रेड एंड वाइट कलर में, दैट इज द वन मॉलिक्यूल। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं? वी हैव सच मॉलिक्यूल्स। ओके, हियर वी कैन सी दैट वी हैव सच मॉलिक्यूल्स हियर। सो नाउ आवर क्वेश्चन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। सो वन मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन होंगे, अगर ये पता चल जाए देन वी कैन कैलकुलेट इट। ओके, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए। तो एक मॉलिक्यूल्स में वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल वाटर के एक मॉलिक्यूल में विच इज H2O, H में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देयर इज ए वन इलेक्ट्रॉन, देयर इज ए वन प्रोटॉन, एंड इन ऑक्सीजन देयर आर हाउ मच? There is 8 electrons and 8 protons. So in one molecule of water there are 10 electron and 10 proton. तो एक मॉलिक्यूल में कितना चार्ज होगा? एक मॉलिक्यूल में कितना चार्ज होगा? एक मॉलिक्यूल में चार्ज होगा 10 इंटू ई। ओके, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितना चार्ज होगा? तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, क्योंकि द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट होता है, पॉजिटिव होता है प्रोटॉन पर, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन अमाउंट जो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है सेम होता है। इसलिए टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। लेकिन कितना होगा? दोनों इक्वल होंगे आपके पास, कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल में कितना चार्ज है, दैट इज 10 इंटू ई, एंड कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज n। ओके, सो यहाँ से हम इसकी n की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज बिकम 10, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 raised to the power minus 19 coulomb, and n is there, this is we have already calculated, that is 250 divided by 18। अभी कैलकुलेट नहीं किया, एक ही टाइम में सब कैलकुलेट कर सकते हैं। 6.02 into 10 raised to the power 23। So when you calculate all these, you will get the value as 1.34 into 10 raised to the power 7 coulomb. Okay, so this is the answer and explanation of this question. I hope you understood it, and if you like it, so please like the video, and if you are new to my channel, so please subscribe it and don't forget to share it. Thank you for watching.